Assalamu alaikum computer students. I am your computer teacher Urusha Tanveer. Hope you all are fine and doing good. Today is our first lecture. First of all, I welcome you in second year. Today is our first lecture which is regarding operating system. We will learn about the operating system, the commonly used operating system, the tasks of the operating system, and why the operating system is being used. What is its importance? Now we will start our lecture. First of all, what is an operating system? It is a program that controls the execution of application program and acts as an interface between user of computer and computer hardware. Means ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है. मीन्स आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, उसमें जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही है, आपका यूज़र आई मीन you are using the computer, so you are the user of computer. ठीक है. And the computer hardware, that is your monitor, your system box, your speakers, keyboard, mouse, these are the things that you use. Whatever you are seeing on your monitor screen, it is because of the operating system that you can see and you can read whatever is written on it. You can use your commands, you can give commands and do whatever you want. So basically your operating system is behind all these, that you are seeing something on your computer screen. Without an operating system, computer user cannot run any program on the computer. Of course, operating system is the main factor. Every desktop computer, tablet and smartphones include an operating system that provides basic functionality for the device. It means जो भी चीज़ आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, इट मीन्स यू कांट रन एनी प्रोग्राम. इवन you will not be able to see anything on the screen. So you won't be able to run your computer system. What are the basic tasks of operating system? Number one is recognizes and install peripheral devices. Peripheral devices means all the devices that are connected with your system box. That can be a mouse, your keyboard, speaker, scanner, printer, your monitor. Anything outside the system box are called as peripheral devices. You have learned it in detail in your first year. So इन सब devices को recognize करना, देखना कि ये कौन सी डिवाइसेस हैं, और उनके अगर ड्राइवर्स नहीं हैं तो उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना, अगर ड्राइवर्स हैं तो उनको उन सारी डिवाइसेस को प्ले करना. यू हैव लर्नड अबाउट फ्लैश ड्राइव, दैट इज़ प्लग एंड प्ले डिवाइस. योर कीबोर्ड, योर माउस, दीज ऑल आर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस. इट मीन्स जैसे ही आप लगाते हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उनके सॉफ्टवेयर्स को रिकग्नाइज़ कर लेता है. रिकग्नाइज़ करता है तो उसके बाद आप उन्हें यूज़ कर सकते हो. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन इज़ मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स. All the files and folders that are on your storage devices, that are hard disk, USB, flash drive, उन सबको मैनेज करना. वो किस तरह सेव होंगे, किस जगह पे सेव होंगे, जो आप फाइल्स बनाते हो, फोल्डर्स, वन फोल्डर विद इन अनदर फोल्डर, सब फोल्डर्स, ये सारी चीज़ें जो आप बनाते हो उन सबको मैनेज करना. उसको हार्ड डिस्क पे वो किस तरह से सेव होंगे, उन सबको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट वन इज़ शेयर्स आउट सिस्टम मेमोरी. सिस्टम की मेमोरी मीन्स योर स्पेस ऑन द रैम. उस रैम की मेमोरी को जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, मीन्स यू आर यूजिंग वर्ड प्रोसेसर, यू आर यूजिंग PowerPoint, you are using internet, you are using playing some audio, anything on your computer, तो उन सब को जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है उन सब के साथ शेयर करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होगा.
Next one is handles system error and alerts user. सिस्टम में जितने भी एरर्स आ रहे हैं, आई मीन इफ़ योर माउस इज़ नॉट वर्किंग, योर कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग, इफ़ योर प्रिंटर इज़ नॉट perfectly attached, your printer is not able to print anything, or you're facing some problem in your system box, any sort of error will be displayed on the screen just because of operating system. Whenever operating system recognize any error or detect any error in your computer, it will simply display it on the screen, which is the responsibility of operating system. Next one is manages system security. सिस्टम सिक्योरिटी, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. हमारे कोई भी डिवाइस है, कोई भी सिस्टम है, यू आर यूजिंग योर मोबाइल्स, यू आर यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम, यू ऑल वांट कि आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहे. सो उसको सिक्योर करने के लिए क्या होता है, हम पासवर्ड्स लगाते हैं, हम पिन्स लगाते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं, वट एवर यू आर यूजिंग, बेसिकली इट इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. आप कोई भी पासवर्ड लगा रहे हो, वो कैसे मैनेज होगा, उन सबको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. नेक्स्ट वन इज़ अलाउज सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर. आपका सॉफ्टवेयर दैट यू इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर, यू हैव लर्न अबाउट दैट वट आर सॉफ्टवेयर एंड वट आर हार्डवेयर. हार्डवेयर टेंजिबल डिवाइसेस जिनको आप टच कर सकते हो, जो हार्ड डिवाइसेस आपको नज़र आ रही हैं. सॉफ्टवेयर दैट इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम यूनिट, जो आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हो, तो उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना, सॉफ्टवेयर कैसे रन होगा कंप्यूटर में और हार्डवेयर उस पर कैसा रिस्पॉन्स करेगा. लेट्स सपोज यू आर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एनी एप्लीकेशन लाइक यू आर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. जैसे ही आपने ऑन किया, इट मीन्स यू आर यूजिंग योर सॉफ्टवेयर. अब उस सॉफ्टवेयर पे कीबोर्ड से जब मैं टाइप करूँगी कोई भी चीज़, मैं ए टाइप करूँगी तो उस सॉफ्टवेयर में वो लिखा जाएगा. आई एम यूजिंग हार्डवेयर दैट इज़ कीबोर्ड. हार्डवेयर को यूज़ करके मैं उसमें डाटा एंटर कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर में वो डाटा टाइप हो रहा है. तो इट मीन्स योर सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन इज़ मूव्स डाटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड डिस्क. टू एंड फ्रॉम मीन्स हार्ड डिस्क की तरफ डाटा लेके जाना और हार्ड डिस्क में से डाटा रिट्रीव करना. ये भी चीज़ आप पहले लर्न कर चुके हो कि आपकी जो कोई भी प्रोसेसिंग होती है तो मेन डाटा आपका कहाँ पे होता है, हार्ड डिस्क में. हार्ड डिस्क से डाटा को उठा के रैम में लेके आना और रैम के बाद उसको एग्जीक्यूट करना. और अगर कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट हो रही थी, आपने सेव करनी है, तो वो पहले रैम में जाएगी और फिर वहाँ से हार्ड डिस्क में जाएगी. तो ये डाटा जो मूव होगा फ्रॉम योर हार्ड डिस्क टू योर सिस्टम CPU, और फिर CPU से आपका जो वापस डाटा जाएगा हार्ड डिस्क में एग्जीक्यूशन के बाद सेव होगा, तो वो डाटा की जो मूवमेंट है इट विल बी कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. लोड्स एंड रन्स अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. नेक्स्ट वन इज़ लोड्स एंड रन्स अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. इट मीन्स जो भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, लेट्स सपोज आपने कोई मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कर दिया, लेट्स सपोज आपने कोई गेम इंस्टॉल की है, कोई भी और सॉफ्टवेयर जो आप खुद से बाद में इंस्टॉल कर रहे हो अदर देन विंडोज़ और अदर देन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसको आपने रन करना है. रन करने का मतलब है कि आप उस पर जब डबल क्लिक करते हो या राइट क्लिक करके ओपन करते हो, इट मीन्स यू आर रनिंग इट. ठीक है, आप रन करोगे तो उसका क्या मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर जो हार्ड डिस्क में सेव है वो वहाँ से पहले लोड होके कहाँ पे आएगा, रैम में. इट मीन्स लोडिंग द सॉफ्टवेयर, एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, लोड होने का मतलब है हार्ड डिस्क से रैम में आना. उसके बाद रन होने का क्या मतलब है कि जब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रैम से CPU के पास चला जाएगा रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए. तो ये दोनों काम भी कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. लास्ट वन इज़ हैंडल्स इनपुट एंड आउटपुट. जितनी भी आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए, यू हैव लर्न इन डिटेल अबाउट द इनपुट डिवाइसेस एंड द आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, सो जो भी आप इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करके इनपुट दे रहे हो या फिर आप आउटपुट डिवाइसेस से आउटपुट ले रहे हो, इन सब को हैंडल करना भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है. तो ये सब टास्क हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है परफॉर्म करता है. नेक्स्ट है कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या यूज़ हो रहे हैं. दे आर, नंबर वन इज़ DOS, then Windows, Macintosh operating system. Next one is Unix or Linux. Number one is DOS. Disk operating system developed, it is
called as disk operating system. DOS stands for it. Next one is, it is developed in 1970s. It is a command line interface. कमांड लाइन इंटरफेस मीन्स आपको यहाँ पे कमांड्स एंटर करनी पड़ती हैं. आपने कोई चीज़ सेव करनी है, यू विल राइट सेव. आपने कुछ फॉर्मेट करना है, यू विल राइट इट एज फॉर्मेट. कोई चीज़ रीनेम करनी है तो आप लिखोगे रीनेम. ठीक है. यू कैन सी इट इज़ जस्ट अ ब्लैक स्क्रीन, और इसमें स्क्रीन पे डिफरेंट कमांड्स वगैरह लिखी हुई हैं. आपको जो काम करना होगा आप वो कमांड टाइप करोगे. मीन्स इट विल बिकम डिफ़िकल्ट. इट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र के लिए इसे यूज़ करना ईजी नहीं है. वन बाय वन आपको कमांड एंटर करनी पड़ेगी. लेट्स सपोज आपने कोई ड्राइव चेंज करनी है एक ड्राइव से ड्राइव मीन्स मैं आपको विंडोज़ की एग्जांपल दूँ तो उसमें आप जिस तरह माई कंप्यूटर ऑन करो तो उसके बीच में क्या होता है, डिफरेंट डिस्क बनी हुई होती हैं. इफ़ यू रिमेंबर, लोकल डिस्क C है, D है, E है, ये डिफरेंट डिस्क बनी हुई होती हैं. एक डिस्क से एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में मूव करने के लिए भी आपको कमांड एंटर करनी पड़ेगी. सो इट इज़ नॉट अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम एट ऑल. कमांड्स डिफ़िकल्ट टू लर्न, ऑफ कोर्स ये कमांड्स हैं, आपको लर्न करना डिफ़िकल्ट होगा, मेमोराइज़ करना, याद रखना डिफ़िकल्ट होगा. हर कोई इसको इजीली लर्न नहीं कर सकता, हर कोई डॉस को यूज़ नहीं कर सकता. डॉस कमांड्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न, मेमोराइज एंड for the user, but it was replaced by more friendly user operating system called Windows in early 1990s. Early 1990s में DOS maximally replace हो गया था Windows operating system के साथ, because Windows was user friendly, it was graphical user interface, pictures की फॉर्म में, icons की फॉर्म में आपको चीज़ें मिल जाती हैं. आप जस्ट क्लिक करने से आप उसे यूज़ कर सकते हो. Even a layman can easily use Windows. So DOS it become obsolete because of Windows operating system. Next one is Windows operating system. It was developed in mid 1980s by Microsoft Corporation. It is a graphical user interface and is user friendly. Graphical user interface means ग्राफिक्स मीन्स इमेजेस. मीन्स इसमें जो भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी आपके मॉनिटर स्क्रीन पे, आपकी LCDs पे, वो क्या होगा, पिक्चर्स की फॉर्म में होगा. यू कैन सी ऑन योर डेस्कटॉप के आपके डिफरेंट आइकन, छोटी छोटी पिक्चर्स बनी हुई होती हैं. कोई रिसाइकल बिन की होगी, डॉक्यूमेंट्स की होगी, आपके कंप्यूटर की होगी. डिफरेंट पिक्चर्स बनी हुई होती हैं जो आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए होते हैं, उनकी पिक्चर्स होती हैं. ठीक है. दे ऑल आर ग्राफिक्स, दीज आर इमेजेस, जिन आइकन्स, दे आर कॉल्ड एज बेसिकली आइकन्स, कि जिन पे आप क्लिक करके आप उनको ओपन कर सकते हो, उन्हें रन कर सकते हो. द यूज़र डज नॉट हैव टू मेमोराइज कमांड्स लाइक डॉस की तरह आपको कमांड्स जो हैं वो मेमोराइज याद नहीं रखनी पड़ती. It allows users to give commands to computer through icon, menus and button. Different icons होते हैं, menus हैं बने हुए, buttons हैं, buttons के थ्रू आप easily उसको use कर सकते हो. ठीक है. It is the most commonly used operating system on the PCs and laptop computer all over the world. Because it is easy, it is not as much expensive as other operating systems. It is easy to use. You don't have to memorize the command. It is user friendly, it is graphical user interface. So all these things make it up to make it a commonly used operating system. Different versions of operating system have been released in the past years, starting from Windows 95, then Windows Millennia, Windows XP, Windows Vista, you have learned about Windows 7, 8, 8.1, then Windows 10, which is the latest version. You can see it over here. This is Windows 10 interface. Next, you will come towards Mac operating system. It stands for Macintosh operating system, which was developed by Potato Incorporation. Mostly it is installed on the Apple computers. Apple computer, of course, you have knowledge about that. It is a Macintosh. Apple is a company that produce, you have learned about iPad, iPhones. These all are the
uh, devices of Mac, Apple computers. The latest version is known as OS X. The latest version of operating system is known as OS X. It is more secure as compared to Windows. विंडोज़ के मुकाबले में ये विंडोज़ हो गया या डॉस हो गया या नेक्स्ट यू विल लर्न अबाउट यूनिक्स, तो इन सब से ये सिक्योर है. बट these computers, of course, Mac operating systems, yeah, your Apple computers or all products of the Apple are more expensive than any other sort of computer. It support very limited application software. Of course, you are using Windows operating system, तो Windows operating system में हर किस्म के application software आप easily install कर सकते हो. जो भी चीज़ें आपको नेट पे अवेलेबल होती हैं आप इजीली उनमें इंस्टॉल कर सकते हो. बट फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट इंस्टॉल ऑल द एप्लीकेशंस. you can only install limited application that are supported by Mac operating system. The OS X is not a widely used operating system like Windows. It is not a widely used operating system. Of course, most people can't afford the Apple products. So it because it is expensive, so no, everyone cannot bear the charges. Next, you will come towards your Unix operating system, which is the last topic of your today's lecture. Unix operating system was developed in 1970s at Bell Laboratories by Ken Thompson and Dennis Ritchie. C language was used in this computer. You will learn about the C++ language here. You have learned about C language in your 10th class. तो C language जो है वो इसको develop करने के लिए यूज़ हुई थी. You have learned कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने develop करना है तो you have to learn some language. कोई लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज होगी जिसको आप यूज़ करते हुए कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे. तो जो आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये C लैंग्वेज को यूज़ करके डेवलप किया गया था. It has greater processing power and better security than Windows operating system. प्रोसेसिंग पावर इसकी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, अच्छी प्रोसेसिंग है एंड बेटर सिक्योरिटी दैन विंडोज़ से ऑफ कोर्स इसकी सिक्योरिटी बेटर है. इट इज़ यूज इन नेटवर्किंग, मोस्टली इन नेटवर्किंग फेज़, जहाँ पे आपको नेटवर्किंग करनी हो. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे जो एज ए सर्वर कंप्यूटर यूज़ हो रहे होते हैं, वहाँ पे हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मेनली यूज़ कर रहे होते हैं. तो इसकी प्रोसेसिंग पावर और जो सिक्योरिटी है इट इज़ बेटर दैन विंडोज़ बट नॉट बेटर दैन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. It is available for wide range of computer system from microcomputer to mainframes. It can be installed on even microcomputer, in mini computer, in the mainframe computers. इन तमाम टाइप के computers पे आप Unix को install कर सकते हो. But as long as we talk about Windows, it can only be installed on microcomputers. So this was our today's lecture. We have learned about the operating system, the tasks of operating system, the commonly used operating system. If you have any question, just ask me regarding you can learn your from page number 9 to page number 12. Each and everything is written on your book. Read it and ask any question if you have. Thank you so much.